तो दोस्तों आज का सेशन हम चालू करते हैं। वेरी थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। आई कैन अश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी लर्निंग ए लॉट मोर थिंग। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी आपके करियर के लिए कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और उसी के साथ जो हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और उसके साथ उसके मेन पावर के बीच में लिंकिंग जो रहता है ना वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम का होता है। उसे कैसे प्रॉपर तरह से गोल्स को एग्जीक्यूट किया जाए और मेन पावर जो है रिसोर्सेस है ह्यूमन रिसोर्सेस वो ऑप्टिमली परफॉर्म करें और उनके करियर में भी ग्रोथ हो। तो एक जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें इंस्ट्रक्शन देने का जो काम होता है ब्रेन का होता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स को अचीव करना थ्रू रिसोर्सेस वो काम होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम का। सो वी आर हैविंग वन ऑफ द वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी मिस्टर रामकृष्ण राव, प्रोमिनेंटली नोन एज कोच राम, जिनको 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एचआर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट and coaching. Currently, he is working as the Chief Learning Officer at Messrs. Page Industries Limited, which owns the brand like Jockey and Speedo. Previously, he has also worked with Aditya Birla Group. इसी के साथ इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि he is awarded as the top 100 global HR influencer in the year 2022. Along with the he has also been awarded as the Chief Learning Officer in the year 2022. He is also the top voice for the LinkedIn. और ग्लोबल एचआर का जो अवार्ड है, मतलब इनको 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो दोस्तों लेट्स वेलकम वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, नन अदर देन कैन हैव द स्पीकर to talk on this topic other than Mr. Coach Ram. Hello, Ram. Am I audible to you? Yes. Hi, Piyush. Thank you very much. Thank you for inviting me. Glad to be here. Good evening. Really happy to have you here in this today's session. Really, I can have the confidence that you invited on this platform will be fruitful for all the participants and they can interact with you by having the live session, and this amazing opportunity will never be available to them because the topic for the session is get extra wins for your career. तो जिस तरह से पहले हम बोलते थे कि जैसे कार होती है, कितनी भी अच्छी लग्जरी कार हो, अगर उसमें वो व्हील्स नहीं होंगे ना तो वो लग्जरी कार की वैल्यू ही नहीं है। उसी तरह से गेट एक्स्ट्रा व्हील्स फॉर योर करियर टू बूस्ट द करियर, वो एक्स्ट्रा व्हील्स के लिए आप जैसे स्पीकर आज इस मंच पे आए हैं। सो आई एम रियली ऑब्लाइज्ड टू हैव यू ऑन बोर्ड एंड ओवर टू यू मिस्टर राम। Great. Thank you very much. Thank you very much for having me. Great to be here. It's a new series, I think, that you're starting. The second episode. I wish you all the best for what you are on the journey for. I'm sure it will benefit a lot of people, and the momentum will pick up, and I'm sure you're up for something very big in future. So best wishes to you. Thank you so much, Mr. Ram. Really, it's an initiative because I would like to share with you one thing. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो, तो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इसलिए ये चीज कर रहा हूँ बिकॉज जब मैंने अपना करियर चालू किया था तो क्लैरिटी नहीं थी कि कौन से पाथ पे जाना है, कौन सी चीज चालू करनी है। डूइंग दिस ये वाज नॉट एन ऑप्शन बट बाय चांस इट हैज बीन गिवन। तो अभी विद द टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग द रिसोर्सेस एंड द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, तो जिससे सही लोगों को सही गाइडेंस मिले, जिससे दे कैन एक्सेल इन देयर करियर
because the lot of opportunities are available in the world, but people are lagging behind it. कोविड के बाद लोग बोलते हैं कि अपनी इनकम लोगों ने कम की है, बट आई हैव डबल्ड माई इनकम पोस्ट कोविड. तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट देयर इज ए लैक ऑफ गैप बिटवीन देम. तो वो गैप को एक कहीं ना कहीं करियर को बूस्ट करने की एक छोटी सी एक पहल है, ए स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम माइंड टू गिव बैक टू द सोसाइटी. Hey, wonderful. So let's get started. How do you want to start? We can ask participants what are the questions they have in mind, and then we can start the conversation from there. Sure. So I request each and every audience, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है ना, तो हमारे जो स्पीकर हैं इतने डायनामिक हैं और इतने ओपन माइंडेड है. उन्होंने बोला कि ऑडियंस के अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो लेट स्टार्ट विद देम, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में कोई भी मेन पावर जैसे कंपनी को अगर ज्वाइन करता है तो उनकी स्पार्क को देख के इनको पता चल जाता है कि वो कहाँ तक जा पाएगा, क्योंकि इन्होंने वो फेज देखा है. जो पर्सन ने ज्वाइन करी है ऑर्गेनाइजेशन और उसका इंटरेस्ट किस चीज को है और उसने अपने करियर को किस तरह से लिया है, उससे उसका ग्रोथ पाथ इन्होंने देखा है इन देयर लाइफ फॉर 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस. सो आई एम डेम श्योर कि वो अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसमें रियली हेल्प करेंगे. और चाहता हूं कि आपके अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो ना तो Q&A में आप टाइप करें इन नेक्स्ट 1 minute, सो ही विल बी डायरेक्टली टेकिंग द क्वेश्चंस. और मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं क्योंकि मेरे को अपने करियर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं इनसे. तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ये पहले दे रहे हैं, तो आई वेलकम क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द ऑडियंस. प्लीज आस्क क्वेश्चंस इन द Q&A or in chat, wherever you like. What do you do now, Piyush? Are you practicing CA? I am working in the field of finance. In the field of finance, okay. Great. So you're part of an organization. Yes. I can see many people are also joining now. So once again, I would like to request all the attendees. Mr. Ram is going to take the questions directly. If you are having any questions regarding your career, you can ask directly in the Q&A. Mr. Ram is having an expertise in the field of learning and development. वापस से बोलना चाहता हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज ए ब्रेन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो प्रमोटर्स होते हैं वो गोल्स कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं उनके पास, और उसी के साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज वो टीम बिल्ड करते हैं उसको कैसे फ्रूटफुली यूटिलाइज करें जिससे वो गोल्स अचीव हो. तो जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम का जो पार्ट होता है, टू हैव प्रॉपर प्लान and learning and development process so that the resources can be optimally utilized to achieve those goals. उसके साथ उसका एग्जीक्यूशन, उनका इवेल्युएशन और उसका रिव्यू होता है टाइमली. सो दे एक्ट एज ए ब्रेन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आपके भी करियर में आप अगर जॉब या फिर अपने कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द Q&A. So Mr. Ram will be addressing the questions directly. या आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को
बढ़ाना चाहते हो और कुछ हिकअप्स आ रहे हैं तो वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। I think Ram, I should start with questions in between. So first, I should ask a question with you, मिस्टर राम। बहुत सारे लोग जब करियर स्टार्ट करते हैं ना तो उनको करियर पार्ट डिसाइड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सेम, व्हाट आर द क्वेश्चंस अ पर्सन शुड आस्क सेल्फ बिफोर डिसाइडिंग राइट करियर ऑप्शंस। जैसे कि मैंने सीए कंप्लीट किया था, मेरे पास ऑप्शंस आते थे कि आई शुड गो फॉर जॉब, आई शुड गो फॉर द प्रोफेशन, आई शुड गो बिजनेस, किसमें जाना चाहिए। तो उनसे क्वेश्चंस अगर मैं खुद से करूं जब करियर चालू कर रहा हूं या करियर पाथ को चूज कर रहा हूं, जिससे मैं सही करियर ऑप्शन चूज कर पाऊं। So career is a very interesting and a very personal thing. So even if so मैं usually एक example लेता हूँ, like someone who loves driving. Okay, so if I like driving, then there are multiple career options for me even within driving. So one, I can become a driver for some company. A company is hiring drivers, I become a driver there. Number two, I learn driving and I buy my own car and I offer, I register with Ola, Uber and become a service there. That is one another option, right? Number three, I start my own company with set of cars and start a fleet and so on and so forth. So though I like driving, that's a common theme. Even in driving, there are multiple options that I can explore. So like you said, you've learned chartered accountancy. You can be an individual practitioner, CA. You can work with a finance company. You can become a finance educator online, and you can build your career. The number of options available to build careers are way too many right now. Yeah. So the questions one need to ask is, what do I want out of my career? And I've done some research around this. What people want out of their careers changes over a period of time. When you start initially, the first couple of years, you're focused on money, working with a good brand, and so on and so forth. And then when 3-4 years, 7 years, 8 years later, you're looking, and people tend to change jobs frequently in the first few years. 7 years, 8 years, then you want to slowly stabilize yourself, want to learn more. You're focused on learning more. The first few years, you're more focused on earning. Then few years later, you're more focused on earning. Sorry. And then gradually, after a few years, you figure out that
you hit something called as a mid-career crisis. There you start questioning, okay, what do I really want to achieve through my career? Then you figure out a legacy. Then you are more focused on contributing to society, doing something which is more beneficial to society. People start questioning about the purpose of their jobs, and so on and so forth. Right. So there are different phases that we go through as we progress in our careers. So that's what tends to happen. So yeah. So the question one needs to ask is, what do I want to achieve out of my career? And there are tools that will. There is a very interesting tool called. There are two tools that I would like to suggest. One is something called as a work values assessment, and two is career anchor. So whenever someone comes to me for career coaching, there are three things that I ask them to do. One is I ask them to take up Gallup strengths assessment. Number two is career anchors. Number three is work values assessment. When you do all these three, from Gallup, you will get to know what are your strengths, which you can use in your career. When you do work values, you understand whether you want to work independently, you want to work under someone, you like working in large groups, you like working, individually on your own. All of those things is something that you figure out. And career anchors, it will that will precisely give you the answer whether you like being entrepreneurial. You want to start something of your own, you like solving problems, or you are someone who wants work-life balance, you want stability, good lifestyle, etc., etc. When you look at these things, you will get clarity in terms of what is it that will give you personally satisfaction. Yeah. So those are the factors that one needs to look at, and once you respond to those, you get answers of what you are looking for. Then you can build your career accordingly. So very wonderfully you have explained the tools and what all things we can opt for in a particular career also. तो मिस्टर राम, आपने जो ये आंसर बोला ना, उससे मेरे को एक स्टोरी कनेक्ट हुई. आई वॉज लिसनिंग ए वीडियो फ्यू डेज बैक, जहां पर एक इंडियन पर्सन ट्रेवल करने गए थे यूके. वहां पे उन लोगों को एक अफगानी ड्राइवर मिला. वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे. तो वो लड़का कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो उससे पूछा कि यार तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कॉर्पोरेट क्यों ज्वाइन नहीं करते, ड्राइविंग का काम क्यों कर रहे हो, ड्राइविंग में तुम्हारा एक लिमिटेशन आ जाएगा, एक खुद ही सेल्फ ड्राइव करोगे. तो उससे जब उसकी इनकम का कैलकुलेशन पता करा ना, तो ही वाज अर्निंग अराउंड 5 to 7 lakhs पर मंथ इन इंडियन INR. तो वहां पे जो कॉर्पोरेट्स में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी लगभग 60 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में कमाता है इन बिग कंपनी. तो उनसे पूछा कि कुछ बिजनेस करने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? तो उसने बोला कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब ये एक सेल्फ ड्राइविंग कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और अभी मेरा प्लानिंग है कि नेक्स्ट मंथ में मैं दूसरी टैक्सी एक और लूंगा और मेरे कुछ अफगानिस्तान से कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाऊंगा, उनको जॉब पे रख के मैं कमाऊंगा, तो जिससे पर टैक्सी मुझे पर एनम अराउंड 30 lakhs का रेवेन्यू होगा. तो इस तरह से उन्होंने एक्सपांशन प्लान उस लड़के ने बताया था. ही वाज जस्ट ऑफ 21. तो पहले उसने एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड चालू किया और उसके बिजनेस उसने डेवलप का एक उसके पास आइडिया था. सो द इंडियन पर्सन वाज गॉट शॉक कि एमएनसीज में काम करने का लोग सोचते हैं कि बाहर जाके करें, उसकी जगह इस बंदे के पास एक छोटा सा आइडिया था और उसने एक बिजनेस कैसे करना है
उसका आइडियाज और ही वाज अर्निंग ए वेरी गुड पे। एक छोटे बिजनेस आइडिया से वो एक बिग कॉर्पोरेट की एक अच्छी लाइफ से ज्यादा कमा रहा था। तो आपने जिस तरह से बोला ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आपका आइडिया है वो आप किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड योर लाइक्स विच यू हैव। सो रियली ए वंडरफुल थिंग यू हैव एक्सप्लेन कि अपने ऊपर है कि किस तरह से हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक और चीज पूछना चाहता हूँ इसी के रिगार्डिंग आपसे कि सपोज मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, मेरे पास बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, तो उस बिजनेस के लिए मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने अभी पढ़ाई खत्म करी है, कोई 1 करोड़ तो देगा नहीं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ करियर ऑप्शंस? तो इस पे आपसे आपको ओपिनियन चाहता हूं मैं। So if you have an idea, if you have a good idea and you're convinced about the idea, getting the funding is not a major issue. Even if it is 1 crore, even if you are a fresher, probably you need to meet more people for you to be able to get the right, for you to be able to get an investor who believes in you. But it's not very tough. So I am a believer that if you decide on what you want, uh, if you decide on the approach that you want to take, if you are convinced with the approach that you want to take, resources will come to you. Be it funding, be it a mentor who can help you, be it someone who solves problems for you, be it someone who want to work with you. All of those things will happen for you. Like even if you want to, I'm sure when you wanted to start this series, you would have, I'm sure you wouldn't have figured out that, okay, these are the 3 people with whom I'll start. You are convinced that I want to start and I want to do this, and you'll get people. There will be dropouts. You'll approach 10 people, 2 of them will say yes, one of them will drop out again, someone else will come. But if you're convinced about what you want to do, eventually answers will come to you. So you will get the support that you want. That's how things happen. So if I have a business idea, I'm convinced about the idea, go for it. Really wonderful. Really totally agreed with you, Mr. Ram. मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने जो आपने बोला ना कि ये सीरीज चालू कर रहे हो, बोले इसमें इससे अच्छा अपना जो करियर है उसको करके ही आप 2 पैसे ज्यादा कमाओ। उसमें तो आपकी ग्रिप है। किसी को अगर फाइनेंस करना है तो 1 एडिशनल कस्टमर यू कैन गेट विद ए लिस्ट एफर्ट। बट मैंने कहा यार मैं अगर जो चीज कर रहा हूँ उससे बेनिफिट या तो मुझे होगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर को होगा। अगर मैं नहीं उस कस्टमर को सर्व करूंगा तो हो सकता है कोई और करे, या फिर मैं मेरे लिमिटेड टाइम पे भी कर सकता हूँ। बट मैं चाहता था कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे एक किसी पर्सन की करियर में अगर 20% भी एडिशनल पे या फिर लर्निंग एड हो ना तो दैट विल बी फ्रूटफुल। तो ये इच्छा थी कि कैसे मैं स्पीकर लाऊं जैसे आपने बताया। बट आई कैन रियली वेरी obliged to have wonderful speakers like you on board in the very first series itself। और ये बात में तो मैं रियली बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी इच्छा है ना तो बाकी सब फैक्टर्स तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। whether it's a money, whether it's a resources, whether the support from every person, सब कुदरत के द्वारा आपको सपोर्ट करते ही है। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आपका डिटर्मिनेशन इतना मजबूत होना चाहिए ना कि आप करना चाहते हो। हर एक जना उसके साथ ही जुड़ना चाहता है जिसकी एनर्जी लेवल पॉजिटिव हो। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ इट एंड रियली आई टोटली अग्री विथ यू। तो इसी से एक और क्वेश्चन इवॉल्व होता है मेरे दिमाग में कि आपने जो पहले जो क्वेश्चन बताया था उससे ही कुछ थोड़ा सा रिलेटेड है कि मैं
अपने अंदर झांक तो रहा हूं कि मेरे को जॉब करनी है और उसी के साथ मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस करने के लिए, या तो फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं और लॉन्ग टर्म में मेरे लिए जॉब में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कैसे थोड़ा सा डिटेल एग्जामाइन खुद को कर सकूं मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में ही, कि वेदर आई एम फिट फॉर अ जॉब, बट मींस आई एम ए जॉब गाय और आई एम ए एंटरप्रेन्योर गाय। तो कौन सी कुछ ऐसी चीज आप बताना चाहोगे कि कौन से स्किल सेट्स या खुद को सेल्फ इवेल्युएशन थोड़ा डिटेल में मैं कर सकूं, जिससे मैं एग्जामिन कर सकूं अपने करियर को। ऐसा नहीं हो कि मैंने 5 साल बिजनेस करा, फिर पता चला कि यार बिजनेस तो मेरे से हो नहीं सकता, और तब मैं जॉब चालू कर रहा हूं, तो 5 साल का मेरा करियर वापस जीरो पे हो जाता है। या तो फिर जॉब कर रहा हूँ फिर बिजनेस में आ रहा हूँ, तो फिर वो स्किल से यूटिलाइज होंगे बिजनेस में, या फिर वापस वहां से जीरो से चालू करना है। अगर मेरे को कुछ पता चल जाए कि अपने आप को मैं एग्जामाइन कर लूं इन द स्टार्टिंग ऑफ द करियर, तो जिससे मेरे को सही करियर पाथ चूज कर पाऊं मैं। So one there are different skill sets that are applicable, especially for someone to succeed in business. There are few distinct skill sets. Your ability to create, your ability to challenge status quo, your ability to face rejections, your conviction in your beliefs. Those are so a job, the amount of failures that you the amount of rejections that you get, if it is 10, the amount of rejections that you get in a business is 100. Yeah. So your ability to face rejections and still be very convinced with what you want to do, those are we need to one needs to reflect on why someone wants to do a business. If you want to do business because it is you get a lot of freedom, you want to do business because it will look cool to say that I am running my own business. If you want to do business because it's easier to make money there, then it's wrong, because none of them are true. It's not easy to make money, and you lose your track, you lose your motivation, interest very shortly. That's number one. Number two, a lot of people in their jobs, who are working in their jobs, they will want to start business. You talk to 10 people, at least for 8 of them, this thought would have come across, saying, mujhe kuch business karna hai, and stuff like that. It's very natural. The question one needs to ask is, should someone am I running away from something, or am I running towards something? Many times I feel like starting my own business because I'm unhappy with my boss, because I'm unhappy with something at work, right? So you don't like your job, you don't like the boss, you don't like the organization. Suddenly you will feel like, yaar ye sab chodo, mujhe kuch akela, on my own I want to do something. So that feeling comes, which means you're not attracted to, you're not wanting to do business. You're just running away from your job, right? Then you're doing it for the wrong reasons. The right reason is
in a job, you are able to do only 10x. In a business, you can do 100x. So you're motivated by what more you can do. You are motivated with a vision. You want to solve a problem. You want to create some impact. You want to add value. Then that's a whole different set of reasons. So one needs to evaluate whether you are running towards something or running away from something. If you are running away, just some reflection will clearly tell you whether you are running away from the job or whether you are running towards being an entrepreneur. So that's a very easy distinction to make. There are many people who get into entrepreneurship, do it for 1 year, 2 years, and then go back to a job. That happens, and it's okay. You figure out, and it's something that you will not have all the answers when you start. And most important is you should not have regrets. You should not be left with a feeling that you want to do business, and you have almost reached retirement, and you're still thinking you want to do business. Right? I've seen many people, when you ask them, "Kya karoge?" They'll say, yeah, job I want to do for the next 2-3 years. I'll have some bank balance, and then I want to do business. Meet them after 3 years, the answer is the same. Yeah, 2 years from now, I want to start business. So you always feel like you want to do something in future. That's a ever continuous future tense types, right? So you don't want to have regrets. So you want to start something, just start, experiment in a small way. Then you will know whether it is working for you or not working for you. Do a side hustle, do part-time business. Part-time business is a very interesting thing. You can try part-time business. You will know whether you're liking it, not liking it, and then you can switch to, you can decide whether being a business owner or being an employee. And both are right. We somehow feel that, starting a business is a great thing and being an employee is a bad thing. No. Being an employee requires certain capabilities, qualities. Being a business owner requires certain capabilities and qualities, and both have their own place. रियली वंडरफुल. मतलब बहुत बार ऐसा होता है लोगों को, जैसे इंडिया में शार्क टैंक आया तो स्टार्टअप का मतलब एक भूत सा लोगों को चढ़ने लगा कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं, बट दैट माइट नॉट बी देयर कप ऑफ टी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. अगर वो, जैसे आपने बहुत सही चीज बताई, दैट आई विल बी, अगर कुछ और नहीं तो वो चीज अपने साथ कैरी करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, कि अगर कुछ काम कर रहे हो तो यू आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर और यू आर जस्ट एस्केपिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. अगर आपका पर्पस है कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस अगर आपका है, तो डेफिनेटली आप कुछ कर जाओगे. और अगर प्रॉब्लम से भाग रहे हो तो डेफिनेटली आप आज किसी चीज से भाग रहे हो, कल किसी और चीज से भागोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू सेटल एट समवेयर. अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके अराउंड कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी आप वो कर गुजरोगे. तो रियली जो आपने एक सेंटेंस में, जो ब्रीफ में आपने वो चीज बता दी ना, रियली वो टू द पॉइंट हिट कर गई आज. तो इसी के रिवॉल्विंग एक हमारे ऑडियंस में से क्वेश्चन पूछा है मिस्टर करण चंदवानी ने, तो उनका क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं. Mr. Karan is saying, I am a finance and account manager in a IT company based in Surat for last 4 years. I have experience of 10 plus years in the field. I aspire to be a CFO, and along with that, I wish to increase the decision-making ability related to finances, accounts, and taxes amongst the workforce in the industry, as well as the promoters and the management. Is it the right direction I should focus on, or should I go
with CFO only and do my work. Your thoughts, please. I am not a chartered accountant. He is not a chartered accountant. Yeah. So I would like to. So thanks, Karan. Thanks for the question. I would like to answer your question with an analogy. The analogy that I use is bullseye or compass. So when you talk about bullseye, it is about like how you play a dart game. There are 10, 8, 9, and you hit on a perfect 10, like how you do that bow and arrow dart thing. So very, very, very sharp. This is my goal. And compass it will show you directionally whether you are in the right path or not. Right, wherever you are, it will show you north is this side. So keep moving towards north. Right, I don't have a perfect destination in mind, but I'm just keeping moving towards north. Why I'm saying that is your question of when you're saying I want to be CFO. The question you should ask yourself is, why do you want to be CFO, and why specifically CFO? Is it the designation that you are fascinated by, and you have something in mind when you're saying that I want to be a CFO? In your mind, the CFO means something, designation, popularity, or the way you can contribute, so on and so forth. So my suggestion would be just spend some time jotting down for yourself why you want to be a CFO. What is motivating, what is attracting you to become a CFO? If you write down 4 or 5 points, then whatever you jot down, those 4 or 5 points, they can be achieved, not being a CFO also. There are different ways of achieving those goals. So I would say look at it more directionally. I'm happy to have a separate chat on this with you one-to-one. You've shared your LinkedIn ID. You can ping me on LinkedIn. We can have a conversation on that. But don't be fixated on, I want CFO, I want this designation, this city, this kind of company, etc., etc. Focus on what do you want out of it. What way you want to benefit out of it. Based on that, we can create other stuff. Really wonderful, Karan. I think जो चीज आपने पूछी ना उसका ब्रीफली आंसर सर ने दिया है. अगर कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन कनेक्ट him on the LinkedIn. You can just let me know. I will share his LinkedIn link with you. So you can directly connect with him. He will be happy to answer your questions because he is helping audience at large. और मैंने इनको देखा है कि लिंक्डइन पे कोई भी इनसे क्वेश्चंस पूछता है ना, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है बहुत टू द पॉइंट, और उनको जरूर ये आंसर करते हैं. तो आप पूछ सकते हैं, या फिर और कुछ हो तो मेरे थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, एज यू फील फ्री. तो सर आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि जो शुरुआत में पूछनी थी पर अभी पूछना चाहता हूं कि आपका जो नाम है वो है मिस्टर रामकृष्ण राव, लेकिन कोच राम से आपको क्यों बुलाते हैं लोग? छोटा हिस्सा है उसका. The reason why people call me Coach Ram is because about 10 years ago, I started calling myself Coach Ram. So aspiration था coaching में आने का. I always wanted to be a coach. 10-12 साल पहले मैंने सोचा था saying मुझे कोचिंग करना है, कोच बनाना है, कोच बनना है. तो उस समय पे मैं
वो राम कृष्णा में कृष्णा को छोड़ दिया क्योंकि लगा कि राम थोड़ा अच्छा बंदा है, सीधा बंदा है, कृष्णा का क्वालिटी थोड़ा कम है मुझ में, तो राम को रखा एंड कोच राम वैसे हुआ. एंड it's an aspiration, it's a law of attraction, it's affirmation. Because I wanted to, I got my coaching certification about 5 years ago. But I've been coaching, calling myself as a coach 10, 12 years ago. So that's again an example of, you brand yourself as what you want to be, and you get those kind of opportunities and stuff like that. रियली वंडरफुल. आई थिंक आपने ऑडियंस के सामने खुद का ही एग्जांपल ऐसा पुट अप कर दिया कि आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हो ना. अगर आप परसीव करोगे, उस पर फर्म बिलीव करोगे, तो वो डेफिनेटली होगा. एंड रियली यू आर द परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट. तो इसी से मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं आपसे, मिस्टर राम, कि जैसे करियर के कुछ ऑप्शंस मेरे पास होते हैं, बट मुझे अभी ये क्लैरिटी नहीं होती है कि आई एम ए बिजनेस गाय और ए जॉब गाय, और विच इंडस्ट्री शुड आई एक्सप्लोर. तो जब करियर की अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो मुझे क्या ऐसा कर सकता हूं, आई एक्सप्लोर डिफरेंट सेक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग द करियर पाथ विच आई वुड लाइक टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म. Can you repeat the question? Agar if I would like to opt for a career path, so before deciding the career options, shall I explore the various sectors before deciding one of the career path which I would like to go for it, because I am not clear about the career path which is good for me. So should I explore various sectors and various industries? So it is always good to have exposure to multiple industries, multiple sectors. I always believe in the fact that you should not be limited to one industry, one sector. You should try yourself in different sectors. So you can start with any sector. Choose sector which is an upcoming sector. Like for example, electric automobiles is a booming sector. We know data science is a booming sector. Anything related to AI is an upcoming sector, right? Probably something like a telecom or manufacturing, and those are not really the future of sorts, right? So you start your journey with something, a futuristic sector. That sector is very dynamic. A lot of changes are happening, right? That way you get to learn a lot. Established sectors, it's a slow journey. Upcoming sectors, it's a very quick journey. Yeah, so you start with one and then you keep moving. It's not like you cannot decide right at the beginning saying, okay, I'll start in EV electric sector, then I'll move to software, then I'll do this. You cannot really plan that way. You can plan probably 1 step, 2 steps ahead. Planning too far ahead also doesn't work. ओके, परफेक्ट. लेकिन इसी से एक क्वेश्चन इवॉल्व होता है मेरे माइंड में, मिस्टर राम. अधिकतर लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी काम चालू कर रहे हो या करियर पाथ चूज कर रहे हो, then you should look from a longer term perspective. You should always set the long term goals instead of short term goals. तो इसी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि how long term goals help in deciding the right career options, or I should go for the short term goals only?
Your opinion on this? Like I said, your long-term goal should be in terms of what you want to accomplish out of your career. Your short-term goal is what you want to accomplish out of your job. There is a difference between job and career. Job is, one thing that you are doing now, right? I am working as a finance manager in one organization. It's a job. What is the career I want to build? The career I want to build, like the question that I think it was Chandan, or I'm not getting the name, Karan. Yeah, like the question that Karan asked. What I want to, he's saying I want to contribute to finance industry, right? I want to make people more aware of finance so that they can take financial decisions more intelligently, whether it is individuals or management, etc., etc. That's a career thought, right? Seeing this is the so then I'll look at, if I want to get into those kind of, if I want to really impact the way people make decisions, etc., etc., then I need to really do something of that kind, right? Like, for example, what the founders of Zerodha are doing, right? So they're creating more awareness about financial products and stuff like that. So when I look at career, I'll focus on what I want to do. When I look at job is more short term, career is more long term. So if your question is should I think short term or long term, the answer is not either or. The answer is both. I need to think long term in terms of what I want to accomplish out of my career. I need to think short term in terms of what is it that I want to achieve from my job right now. Really perfect. I think some of the person has raised just now from the audience. So if anyone would like to ask any of the questions from the speaker, they can just type in the chat box or Q&A. So the speaker will be directly resolving their issues. So this is a golden opportunity which every one of us are getting. Really, by the end of this session, I am damn sure this session will boost my career for sure. And the answer which Mr. Ram has given to us, really long term and short term. If अभी तक तो क्लियर ही नहीं होता था कि जॉब और करियर में क्या डिफरेंस है, अधिकतर लोग यही समझ बैठते थे कि जो जॉब कर रहे हैं वही उनका करियर है. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जॉब एंड द करियर विच दे आर ऑप्टिंग फॉर. आप करियर लॉन्ग टर्म होता है और जॉब में आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इसी के साथ लास्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं. अगर ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो लेंगे, वरना और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जोट डाउन रखे हैं. मिस्टर राम, बहुत बार क्या होता है कि मैं अपना करियर जैसे चालू कर रहा हूं, पर मुझे बताने वाला कोई नहीं होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. तो हाउ ए मेंटर हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग और बिल्डिंग द राइट करियर, और किस तरह से हम अपना मेंटर आइडेंटिफाई करें और कैसे अप्रोच करें, उस पे आपको मैं समझो आज एक सेशन ले रहा हूं, तो मेरे पास जो इस सेशन में ऑडियंस है वो अलग अलग फील्ड से है, लेकिन उनकी फील्ड में वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो मेंटर चाहते हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर मेंटर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपसे उसका आंसर चाहता हूं. mentor is someone who has been in your job. Mentor is someone who has walked in your path. Mentor is someone whom you see that you aspire to become.
right? So if I'm really impressed by one CFO, the way he has grown in the career, and I wish to become like him, then he's my mentor. Then I reach out to him, connect with him, see what problems he faced, how he solved those problems, how I can solve, how I can build my capabilities, so on and so forth. That's how I do it. So if I'm choosing a mentor, I should look at, I should be able to see my future self in that person. Not exactly, but similar, right? So that's how you choose a mentor. Similar field, similar career path. That's how we explore and identify the mentor. And it's one should have 2 or 3 mentors, not just one mentor of sorts. रियली परफेक्ट। आपने जो चीज बताई ना कि हर एक जो मेंटर है उनसे भी अलग अलग क्वालिटी हम सीखनी चाहिए और सीखते हैं। अधिकतर लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता था और ये क्वेश्चन करते थे कि आपका एक ही गुरु होना चाहिए, अगर आप एक से ज्यादा गुरु रखोगे तो आप रास्ते भटक जाओगे। लेकिन आपने जो चीज बताई कि अलग अलग रास्ते पे अलग अलग तकलीफें होती है, तो हर एक तकलीफ को समझने के लिए, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए एक जना काबिल नहीं होगा, या उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके अलावा आपको दूसरे रास्ते पे चलने के लिए, आप डेजर्ट पे जा रहे हो और एवरेस्ट की चढ़ाई करोगे, तो दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस और डिफिकल्ट्स हैं, तो दोनों में आपको सॉल्यूशन तो मिलेगा पर वही रास्ते का मिलेगा। तो आपने जो चीज बताई है कि 2 or 3 mentors will provide the right path or right solution. So really a very unique reply I got from you, क्योंकि अभी तक लोग बोलते थे एक मेंटर होना चाहिए, आपने बताया 2 से 3 होने चाहिए। रियली अप्रिशिएटिंग। तो और तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन 10 बजे तक का कमिटमेंट जिस तरह से ऑडियंस को बोला था, और आपके भी कमिटमेंट्स होंगे, और नवरात्रि का भी फेस्टिवल चल रहा है। आज जो ऑडियंस नवरात्रि का सेलिब्रेशन जो गुजरात में है उसको छोड़ के सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, सो रियली इट इज वेरी अप्रिशिएटिंग। और आपने भी इस टाइम पे सेलिब्रेशन के जो मूड चल रहा है उसमें टाइम दिया, उसके लिए भी, आपके लिए भी रियली थैंकफुल टू यू। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो लास्ट में आपसे ही कहना चाहता हूँ मिस्टर राम, अगर एट द एंड इफ यू वुड लाइक टू गिव सम सजेशंस और समथिंग फ्रॉम योर एंड टू द ऑडियंस एट लार्ज, कि कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए या कौन सी चीजें हमको अपने करियर को बूस्ट करने के लिए करनी चाहिए, जिससे, जैसे कि एक गाड़ी में जो टायर काम करते हैं फॉर स्पीडिंग अप देयर करियर, द एक्स्ट्रा व्हील्स टू द करियर, तो आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं टू द ऑडियंस एट लार्ज? So my suggestion, like every vehicle, car, गाड़ी, which needs servicing, हर 3 महीने 6 महीने हम सर्विस करते हैं। ऐसे हमको हमारे करियर के बारे में सोचना है। सो हर 6 महीने हमको रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे जॉब ढूंढने के लिए नहीं, ये रिफ्लेक्शन के लिए कि 6 महीने में रेज्यूमे में कुछ बदलाव नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है। ग्रोथ के लिए 6 महीने में कुछ तो स्किल्स वी शुड हैव गेन्ड, कुछ तो नया चीज हमको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। So इसलिए one should reflect every 6 months in terms of, okay, where am I headed in my career? What do I need to do differently? So on and so forth. In that way. So reflect on your career every 6 months. Take support from
keep have your mentor conversations. Have your mentor conversations always. Meet your mentor once in a quarter. Reflect on your career once in 6 months. And change your role or sector or job every 2-3 years. That's very, very important for you to constantly learn, improve, and grow. Yeah, so those are my suggestions. रियली अमेजिंग मिस्टर राम. अधिकतर लोग यही सोचते थे कि रेज्यूम जब उनको नौकरी की जरूरत हो तभी बनाना चाहिए और तभी अपडेट करना चाहिए, वरना वो पड़ा रहता है. नौकरी 5 साल तक चल रही है तो जैसे कि एक बिजनेस पर्सन होता है ना, हर साल अपनी बैलेंस शीट देखता है कि मेरी बैलेंस शीट क्या बोलती है, कहाँ पर मेरे असेट्स है और कहाँ पर लायबिलिटीज है. उसी तरह से रेज्यूम में एक जॉब कैंडिडेट्स अगर कोई होता है तो वो उसकी एक बैलेंस शीट की तरह है कि उसमें असेट्स में इंक्रीज हुआ है, उसकी कैपिटल बढ़ी है या फिर कम हुई है, या सिर्फ उसने सिर्फ लायबिलिटी ही बढ़ाते गए हैं. बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि टाइम के साथ आपकी मनी की वैल्यू कम होती है. उसी तरह से अगर आपकी स्किल सेट वो ही है, टाइम के हिसाब से आपने अगर अपस्किल नहीं करा है तो यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ. तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि रेज्यूम को अपडेट कोई कैंडिडेट है इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, लेकिन इसलिए कि सेल्फ रिव्यू के लिए. सो रियली अमेजिंग टेक अवे. इट्स लाइक ए बैलेंस शीट फॉर द पर्सन हु आर डूइंग द जॉब कि वो करियर में उनकी पोजीशन क्या है. So at the end, I would really like to thank you for giving such a wonderful opportunity to me and the audience at large, and really the extra wheels which we needed for boosting the career, in choosing the right career path, whether it's a job or a business or the profession which we are carrying on. Really, the session which you have taken will add extra wheels in the career to all the audience and me. And I am really thankful to you, Mr. Ram. Just the details which I shared for the session and the purpose I shared, the intention you agreed just at the single call. Really, I am very thankful to you for sparing the great 1 hour with us and giving such a memorable moment to us. Really, the memory which we enjoyed in the last 1 hour will be cherishing, and it will really add a valuable moments in boosting our career. I am really thankful to you for giving such a wonderful opportunity on behalf of all members. Really thankful to you. Thanks a lot, Mr. Ram. My absolute pleasure. Thank you for creating this platform. I'm sure this platform will grow more and more and will benefit a lot of people. So best wishes for your journey. Thank you so much. Thanks a lot, Mr. Ram. Okay. Thank you. So with this, I would like to thank each and every audience for sparing their time. नवरात्रि के फेस्टिवल में आपने अपने करियर को इंपॉर्टेंस दिया और आज का सेशन अटेंड करा. रियली दिस सेशन विल एड मोर वैल्यूज इन योर करियर. डू फॉलो कोच राम ऑन लिंक्डइन, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो उनको डीएम करिए आप. और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट सैटरडे ऑल्सो वी आर हैविंग ए वेरी वंडरफुल सेशन विद मिस निरंजना चौधरी. शी इज रनिंग ए एचआर कंसल्टिंग फर्म. बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन होता है जॉब में कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम ए कैंडिडेट, और जो हमारे कैलिबर है उसके मुताबिक हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और कहां पर. So Nilanjana has worked in the corporates also, and she is running a recruitment firm and HR consulting firm from last 7+ years in the city of Bangalore. So really, it will be helping to the audience at large. So I request each and every one of you, जैसे कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था from Mr. Coach Ram, तो इसी की तरह से नेक्स्ट जो सेशन होगा, really it will help you in boosting your career. Do attend the session. The link I will share in the group. Share with your friends, family members,
and help the audience at large. और ये जो वीडियो और आज का जो सेशन है उसमें जिन्होंने लाइव अटेंड करा उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली लाइव Q&A विद द स्पीकर, क्योंकि अगर इनका पर्सनल टाइम आप लेने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके खुद के पर्सनल शेड्यूल्स बहुत बिजी होते हैं. दे आर हेल्पिंग टू द ऑडियंस एट लार्ज, लेकिन लाइव सेशंस अटेंड करने के द्वारा आप Q&A डायरेक्ट पूछ पाए. लेकिन अगर किसी जने ने मिस कर दिया ये सेशन तो इसका रिकॉर्डिंग लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है मेरे YouTube चैनल पे भी, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं. द लिंक विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप. You can directly go to my channel, Piyush Kotak, the Commando at YouTube. Do subscribe the channel and do share the link of this YouTube video in your friends, family members, so they can get the benefit out of it if they have missed it. Thank you so much. Bye-bye. Good evening. See you soon in the next session. Thank you so much. Bye-bye.